Students, in my earlier video lecture, we studied accounts of local government. In that, we solved problem of Gram Panchayat and problems of municipal. Okay. Now, in this video lecture, we started new unit, that is unit first of advanced financial account. This is totally theory unit is Indian accounting standard. Okay, so let's start with the meaning of Indian accounting standard. The government of India and the Ministry of Corporate Affairs has made it mandatory for companies to comply with the requirements of the Indian accounting standards. These standards are principles derived on accounting. All companies have to apply the Indian accounting standards. ओके उसके हिसाब से ही सब अकाउंट्स जो है वो मेंटेन करने हैं. ओके तो 1 से लेके 32 तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं. उसमें से हमें सिर्फ हमें जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है, देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है. ओके देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है, 18 है, 19 है, 20 है, 24 है, 26 है और 29 है. ओके सो ये इतने हमें सिर्फ स्टडी को हैं क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके बाकी के जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें से कुछ ही अपनी स्टडी को है. ओके फर्स्ट ईयर में कुछ आपको हो गए होंगे, बाकी के जो है वो अभी हम डिस्कस करेंगे. ओके so such standards have been developed in Indian over the period of time. These standards are also referred to as Indian accounting standards. Such standards have to be adopted by different form of companies and NBFCs in India under the supervision and vigilance of the Accounting Standard Board. The Accounting Standards Board was developed as a regulatory authority and body in 1977. Okay, the Accounting Standard Board is a professional and autonomous body which is governed under the Institute of Chartered Accountants of India, that is ICAI. Okay, along with this institute, there are other bodies such as Co-Federation of Indian Industry, then Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, and Associated Chambers of Commerce and Industry of India, which govern the requirements related to the Accounting Standard Board. Okay, individuals, professors, and academics from the above body bring out different standards related to accounting. Indian accounting standards have been developed in order to harmonize standards related to international accounting and reporting. International accounting standards are present under the International Financial Reporting Standards, that is IFRS. The Indian government body that recommended these standards to the Ministry of Corporate Affairs is the National Advisory Committee on Accounting Standards. Okay, so let's start with the discussion of Accounting Standard 7, or that is construction contract. Okay, so Accounting Standard 7 construction contract describes and lays out the accounting treatment in respect of the revenue and cost in relation to a construction contract. ओके सो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड जो कुछ भी रेवेन्यू कलेक्शन है और जो कुछ भी कॉस्ट उसमें लगी है, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट AS7 जो है वो कहता है. ओके AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी यूज्ड in for the accounting of construction contracts in the financial statement of the contractors. Okay, so let's understand in the detail Accounting Standard 7 construction contract. In that क्या क्या होता है उसमें? Types of contract, then
combination and segmenting of construction contracts. Then revenue from a contract, cost of a contract, recognition of revenue and cost from a contract, then determination of the stage of completion, then recognition of expected losses, and lastly disclosures required in financial statements. ओके सो ये सब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में. ओके सो रिलेटेड टू रेवेन्यूज एंड रिलेटेड टू कॉस्ट. ओके सो रिकग्नाइज करने के लिए ये स्टैंडर्ड बनाया है, उसके हिसाब से ही कैलकुलेशन होनी चाहिए. ठीक है. द नेक्स्ट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, रेवेन्यू रिकग्निशन. Accounting Standard 9 deals with the basis for recognition of revenue in the statement of profit and loss of an enterprise. The accounting standard is concerned with the recognition of revenue arising in the course of the ordinary activities of the enterprises from sale of goods, the rendering of services, and the use by others of enterprise resources yielding interest, royalties and dividends. Okay, so ये रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करना है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 बताता है. ओके तो इसमें कौन से एक्टिविटीज आते हैं? सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज मतलब गिविंग ऑफ सर्विसेज, एंड यूज बाय अदर्स ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज यील्डिंग इंटरेस्ट, रॉयल्टीज एंड डिविडेंड. ओके इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो है दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डज नॉट डील विद द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ रेवेन्यू रिकग्निशन टू विच स्पेशल कंसिडरेशंस. ओके दैट इज रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम हायर परचेज एंड लीज एग्रीमेंट्स, रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट एंड अदर सिमिलर सब्सिडीज, एंड रेवेन्यू ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज अराइजिंग फ्रॉम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. ओके सो इसकी एप्लीकेबिलिटी सिर्फ किस में है? Interest, royalties and dividends, sale of goods and rendering of services. Okay, understand? Good. Next है accounting standard 14, accounting for amalgamation. Okay, सेकेंड ईयर में आपने अमलगमेशन का अकाउंट किया है, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है उसका. दिस इज शॉर्ट नोट ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, accounting for amalgamation, which deals with accounting to be done in case of two companies amalgamated, like nature of amalgamation, methods of accounting for amalgamation and disclosure to be made. Okay, इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे है? द स्टैंडर्ड डील विथ अकाउंटिंग टू बी मेड इन बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी इन केस ऑफ अमलगमेशन. ओके then accounting standard is not applicable to cases of acquisition of shares where the acquired company is not disallowed and continues to exist. And thirdly, accounting standard is applicable where acquired company is dissolved and separate entity ceased to exist. Okay, so इसकी applicability यहाँ पे है. ट्रांसफरी कंपनी में अगर उन्होंने दो कंपनी में अमलगमेट किया है तो उसका सभी कैलकुलेशन इसके हिसाब से होगा अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14. ओके इसके की टर्म्स है क्या है कि ट्रांसफरर कंपनी मीन्स द कंपनी विच इज अमलगमेटेड इनटू अनदर कंपनी, एंड ट्रांसफरी कंपनी मीन्स द कंपनी इनटू विच अ ट्रांसफरर कंपनी इज अमलगमेटेड. ओके सो ये दो टर्म्स है, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी. ओके देन उसका नेचर जो है अमलगमेशन का, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर. अगर मर्जर में हो गया है ना, मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज होती है, इट इज़ एन अमलगमेशन विच सेटिस्फाइज ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस. अगर ये कंडीशंस फॉलो होते हैं नीचे के मैंने अभी बताए वो फॉलो होते तब भी ये S14 एप्लीकेबल है उसको. All the assets and liabilities of the transferor company become the assets and liabilities of the transferee company after amalgamation. Then shareholders holding not less than 90% of face value of the equity shares of the transferor company
become equity shareholder of the transferee company by virtue of the amalgamation. The consideration to equity shareholders of the transferor company who agree to become equity shareholders of the transferee company is discharged wholly by the issue of equity shares in the transferee company except that cash for fractional shares. And lastly, the business of transferor company is intended to be carried on the transferee company after amalgamation. Assets and liabilities of the transferor company should be taken over and incorporated in financial statements of transferee company at book value, except to ensure uniformity of accounting policies. An amalgamation in the nature of purchase. It is an amalgamation which does not satisfy any one or more of the 5 conditions specified above. Okay, ये जो 5 conditions है वो satisfy होने के बाद ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के हिसाब से कैलकुलेशन होता है. मेथड क्या करते हैं? मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर स्टैंडर्ड 2 मेथड्स हैं. एक पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड एंड सेकेंड वन परचेज मेथड. ओके, सो ये 2 मेथड्स हैं वो एप्लीकेबल होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर अमलगमेशन में. ओके, देन अभी नेक्स्ट देखेंगे हम रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स AS 18, Accounting Standard 18. This standard establishes requirements for the disclosure of firstly related party relationship and secondly transactions between a reporting enterprise and its related parties. Okay, the requirements of these standards apply to the financial statements of each reporting enterprise as also to consolidated financial statements presented by a holding company. जो होल्ड करती है कंपनी उसके हाथ में ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होल्डिंग कंपनी प्रेजेंट करती है. एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18, related party means at any time during the year one party has an ability to control the other party and to exercise significant influence over the other party in making financial or operating decisions. Okay, रिलेटेड पार्टी में क्या क्या कवर होता है? कौन से रिलेटेड पार्टी रिलेशन में क्या कवर होता है? एक तो होल्डिंग कंपनीज, subsidiaries and fellow subsidiaries. Another is associated and joint ventures of the reporting enterprises. Then investors in respect of which reporting enterprises is an associate or a joint venture. Individual owing direct or indirect interest in the voting power of the reporting enterprise that gives them control or significant influence over the enterprise. And relatives of any such individual, key management personnel and his relatives, and lastly enterprises over which any person who is a key management personnel or has direct and indirect interest in voting power can exercise significant influence. Okay, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 की क्या नीड है ये देखेंगे हम. द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज should disclose the name of the transaction related party. Then a description of the relationship between the parties, description of the nature of transaction, volume of transaction either as amount or part of thereof. Okay, any elements of the related party transaction which is necessary for an understanding of the financial statements. Outstanding amount from related parties at the balance sheet date. Provision for doubtful debts due from related parties at the balance sheet date and amounts written off or written back of debts due from to related parties. Okay, so example क्या क्या है related party transaction के? एक तो purchase और sale of goods, then purchase or sale of fixed assets, then rendering of services, rendering of receiving of services,
then agency arrangements, leasing or hire purchase arrangement, transfer of research and development, then license agreements, then finance including loans and equity contributions in cash or in kind, then guarantee and collaterals, and management contracts including for deputation of employees. ओके, सो ये सब होता है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप में, डिस्क्लोजर्स में. ओके, देन नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, लीजेस. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 deals with the accounting policies applicable for all types of lease except certain listed below. A lease is a transaction whereby an agreement is entered into by the lessor with the lessee for the right to use an asset by the lessee in return for a payment or series of payment for an agreed period of time. ओके, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट रहता है ये भी, लेकिन ये लीज का कॉन्ट्रैक्ट रहता है. देन व्हाट काइंड ऑफ लीज आर नॉट कवर्ड अंडर दिस स्टैंडर्ड, कौन से इसमें इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में कवर नहीं होते हैं. तो दिस स्टैंडर्ड इज नॉट एप्लीकेबल टू लीज एग्रीमेंट फॉर एक्सप्लोरिंग और यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, फॉर एग्जाम्पल ऑयल, गैस, टिम्बर, मेटल्स एंड अदर मिनरल राइट्स. देन लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स, for example, motion picture films, then video recording, plays, manuscripts, patent and copyrights, and lease agreements for use land, ये इसमें covered नहीं होते. Okay, so there are two types of lease, finance lease and operating lease. Okay, ये दो टाइप के एग्रीमेंट जो है वो लीज अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में होते हैं. एक तो फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज. ओके, so student, I hope you understand this lecture. If you have any difficulty, if you have any query, then message me in my comment box. See you soon in my next video lecture. Till then, take care. Thank you.